Hello everyone, welcome to my class. This is me Chandrasekhar. So yesterday we are stopped at this question. So principles of constitutional autocracy in which act this is one introduced. So that is in 1935. We are discussed this question yesterday. That means in previous session. So we will move to next question right now. That is okay. So the Indian legislature was made bicameral for the first time by सिंपल क्वेश्चन है जो इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे राज्यसभा दैट मीन्स राज्यसभा लोकसभा जैसा है इसको बाई कैमरलिज्म कहते हैं। ठीक है। सो जैसे ही इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है 1919 पे, ठीक है, बाई कैमरलिज्म आता है। ओके। सो 1919 एक्ट क्या तरह 1919 पे आया हुआ है बाई कैमरलिज्म। ये बताता है जो प्रोविंशियल दैट मीन्स जो भी राजा होते हैं उन्हीं के पास उसका पूरा अधिकार होते हैं। जो कुछ ही अधिकार उसको दिए जाते हैं जो उसको ऊपर वो ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी कर सकते हैं। मतलब जो उसकी चाहे वो कर सकते हैं। उसके अंदर जितना पावर उसको दिया गया है इसमें वो ऑटोक्रेसी उसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। बाकी रेसिडुअल पावर जो गवर्नर जनरल के पास होते हैं। ठीक है। जो और सेंट्रल के पास कुछ रिजर्व पावर्स होते हैं जो कुछ भी टेलीग्राफी होगा और डिफेंस सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम एवरीथिंग विल बी हेल्ड बाय सेंट्रल। समथिंग सम अदर फैसिलिटीज विल बी गिवन टू द provincial for the facility and remaining that means residual powers will be handed over to the governor general. This act is this facility is done in bicameral for the first time. It is in 1919. Okay. So UPPCS means this question is taken from UPPCS means 2018. Okay. So which of the following acts introduced the bicameral legislation at the center? Same question. Okay. So you can see the answer is 1919 Act. So same question in MP PCS 2013. This question is 2008. Okay. So language may be different and options may be short or long, but that's not going to matter, right? The content which they asked is same here. Okay. So by solving the different types of question papers, you will come to know that questions possibilities of repeating is more, and you will get an idea how what kind of questions can be asked in the exams. Okay. So don't focus on anything in this video, just focus on the questions and options and which year they are asked. Either it is a beneficiary for your preparing exam or not, just focus on that one. Okay. So either maybe it in language or my explanation, that is not going to matter. I know whatever it may be, just you need to focus on the question and options in the which they are asked. Either is it benefit for you or not, are you developing your question solving skill or not. That means you need to focus on these points only. I hope you got my point. Okay, we will discuss this question right now. The power of the president to issue ordinance relic of. So in which act the power of the presidency of power of ordinance was given to the president. Okay. सो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ये होते थे जो गवर्नर जनरल मतलब वाइसराय वही प्रेसिडेंट होते थे। उसको ऑर्डिनेंस पावर किस एक्ट के तहत मिला, क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर सीधे सीधे ये होते हैं 1935। 1935 के उधर है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावर दिया होते हैं। Nowadays the ordinance power in president is in article 123. Okay. So in this you can or ordinance on any bill or anything, okay, that will stands minimum for 6 months. So these are the extra facts. Okay. So you need to just focus on the UPPC means 2000 question paper question it is. Okay. So possibility of the repeating is there in any exam in at any time. You need to aware of this one. Okay. So ordinance. Next question, which act for a first time made it possible for Indians to take some share in administrative of their country. So कौन सी एक्ट है जिनमें से इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ डिसीजन मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें से पार्टिसिपेशन लेने का एक्ट कौन सी एक्ट है जिसमें
परमिशन दिया गया है, मतलब उनमें से आया हुआ एक्ट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है यूपीपीसीएस के 2012 का आंसर है 1833। इसी में एडमिनिस्ट्रेशन पे उसको हम अलाउ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ किया है इसको पार्टिसिपेट करने का, इंडियंस को भी। ठीक है, कौन सी वाइसराय मतलब कौन सी गवर्नर जनरल के तहर के आए हुए एक्ट है तो ये 1835, इट इज that is William Bentinck, right? At that time, William Bentinck is there. So during his power, the 1933 Act was came. Okay. So the key points are share Indians to take some share in administrative of their country, only for administrative of their country. Okay. So answer is in 1833. So okay, we'll move to next question. The distribution of powers between the center and state as in the constitutional of India is based upon which of the following plans? Okay, try to understand the question. The distribution of power. Okay, so the distribution of power between center and state, between center and state, based upon which of the following plan? Okay, so our question is simple. Just thing we need to focus is कौन सी एक्ट के तहत जो सेंटर और स्टेट के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। दोस्तों लिख के रखना, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, आ चुकी है। ठीक है, कर्नाटका पीसीएस पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं भी आ सकता है। छोटी छोटी एग्जाम या बड़े एग्जाम आईएएस के कौन सी भी क्वेश्चन से रिपीट होने का चांसेस बहुत रहता है। ठीक है, शायद आप लोगों को पता रहे होगा ये, जस्ट यू मे बी यू आर अवेयर अबाउट दैट वन आईएएस क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Initially, I told that federal system and hierarchy at the center was introduced in India. This question is little bit tricky, so I will solve it. Okay, so I will make this question easy by a simple word. Just you need to concentrate on 1990 and 1935. Look, diarchy at the province means it is in 1990. Okay, diarchy at the center means it is in 1935. By a single word, diarchy at the center introduced in India, that is 1935. If you know federal system, it's okay, you can directly came to 1935. If this one is going to be confuse you, that is also 1935. Okay, so federal system is completely in 1935, either maybe it in federal court or federal system, whatever it may be, in 1935. So I hope these questions are helpful for your next upcoming exams. So thanks for watching the video. Do like and share, subscribe to the channel. Thanks for watching.